कैसे हैं सब? अरे यार, इसका सेटअप नहीं हो रहा है। So hello everyone. So welcome to our day 101 of our live study with me. It's a day 101 and I welcome everyone in the stream. Okay.
हाय भगवान। 7th मसल जी, वेलकम टू आवर स्ट्रीम भाई। भाई पढ़ने जा रहा हूँ यार, अभी सेटअप कर रहा हूँ बस। भाई मैं कॉलेज में हूँ और बीटेक फर्स्ट ईयर में हूँ, तो सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ बस। अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, मतलब आ गए हैं बेसिकली, 3 मार्च से हैं मेरे, तो उसी की तैयारी कर रहा हूँ भाई। हे भगवान।
ईसी नो, सीएसटी का भाई, कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन है भाई। कौन से कॉलेज से है? भाई गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सिचुएटेड इन ग्रेटर नोएडा। अच्छा, अच्छी बात है भाई। तुमने बीएससी किया, मैं बीटेक कर रहा हूँ चंडीगढ़ में। वो जॉब कर रहे होगे शायद, मतलब 100% जॉब। क्या कर रहे हो? एमएससी कर रहे हो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से? तो कैसा लगा आपको पुराना कॉलेज आपका? मैकेनिक्स।
अभी एमएससी कर रहा हूँ। भाई मैंने थोड़ी कुछ कोडिंग सीखी थी, C++, जावास्क्रिप्ट। मुझे भी सीखना है भाई। अभी अभी सेकंड सेमेस्टर में सीखूंगा। चलो फिर शुरू करते हैं पढ़ना। ओके भाई, आपको भी यार एमएससी करो और अच्छे से जॉब लो या फिर जो कुछ भी। ठीक है, बाकी मैं तो फिर बीटेक करूँगा यार, 4 साल गुलगोटिया के नाम। Unit to Introduction to IC engine and electric vehicles, basic definition of engine and components of engine, construction and working up to stroke and 4-stroke SIC engine. Explain the following: IC engine, stroke, bore, compression ratio, components of an IC engine, skill engine process, EV, batteries and charges. क्या देख रहे हो? नहीं, अभी मैं पढ़ रहा हूँ फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसमें चैप्टर नंबर 2 SI इंजन, CI इंजन, 2-स्ट्रोक इंजन, 4-स्ट्रोक इंजन, इसको पढ़ रहा हूँ। व्हाट इज, देखो पहला क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा,
सुसाइड सुसाइड नहीं करना चाहिए, बाकी कर लिया तो क्या ही कर सकते हैं। सीओ नहीं क्लियर हो रहा है तो क्या दिक्कत है, आगे ट्राई करो या फिर और कुछ देखो। सुसाइड इज नॉट एन ऑप्शन आई थिंक। इंजन नहीं, मैं नहीं खेलता भाई। इंजन क्या होता है? इंजन होता है, इट इज़ अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ यूजफुल एनर्जी। ठीक है, इंजन इट इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ यूजफुल एनर्जी, chemical energy and thermal energy, and the thermal energy in mechanical engineering, sorry, mechanical energy। केमिकल एनर्जी, जैसे केमिकल एनर्जी रहेगी तो उसे जब बर्न करेंगे फ्यूल की मदद से तो हमें थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, बोले तो हीट एनर्जी में। और हीट एनर्जी में जब इंजन लगाएंगे तो हमारा मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिकली इट विल गिव अस सम वर्क। Based on combustion engines are classified into internal combustion engine and external combustion engine. It is based on the combustion। ठीक है, तो केमिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी फ्यूल बर्निंग होगा। ठीक है, केमिकल एनर्जी रहेगी जब फ्यूल बर्न करेंगे, फ्यूल बर्न करके उसे हम लोग कर देंगे थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट। थर्मल एनर्जी से इंजन लगाएंगे, मैकेनिकल वर्क में मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया। तो बेस्ड ऑन कंबक्शन इंजन आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, इंटरनल कंबक्शन इंजन, एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन। इंटरनल कंबक्शन इंजन क्या होता है? जो फ्यूल इंजन के इनसाइड बर्न करता है उसे इंटरनल कंबक्शन इंजन कहते हैं। इन इंटरनल कंबक्शन इंजन द बर्निंग और कंबक्शन ऑफ द फ्यूल टेक्स प्लेस इनसाइड द सिलेंडर। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। In internal combustion engine, bro, you all could like the video if you want। Okay, in internal combustion engine the burning or combustion of fuel takes place inside the cylinder। Example automobile engines, जैसे पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन। कब एग्ज़ाम भाई? 3 तारीख से शुरू है, 3 मार्च से। इन इंटरनल कंबक्शन इंजन द बर्निंग और कंबक्शन ऑफ द फ्यूल टेक्स प्लेस इनसाइड द सिलेंडर। फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंजन्स, तो ऑटोमोबाइल इंजन्स में जैसे पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, ये सभी इंटरनल कंबक्शन इंजन में आते हैं। ठीक है, बढ़िया। तो ये हमारा ऐसा होगा इंटरनल कंबक्शन इंजन। इसमें क्या होगा कि स्ट्रोक ऐसे होगा और है बेसिक क्लियरेंस वॉल्यूम और है स्वेप्ट वॉल्यूम।
TDC, BDC. Total volume is on clearance volume upon swept volume, replacement swept volume. ठीक है भाई। सिंपल कंबक्शन इंजन है, इसमें क्या है ऐसा हमारा क्या स्ट्रोक है, यहाँ स्ट्रोक, तो इनिशियली हमारा स्ट्रोक यहाँ पर था, तो टोटल वॉल्यूम BS प्लस BS था, होता अलग बात है। ठीक है, इसने पहले BT वॉल्यूम था, फिर VS वॉल्यूम इसने प्रेस किया। ठीक है, तो यहाँ VC बन गया, क्लियरेंस वॉल्यूम, clearance volume, that is a VC, swept volume, that is a VS, TDC, top back center to bottom back center। ठीक है, और स्ट्रोक ऑफ लेंथ की स्ट्रोक है L स्ट्रोक। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू VC प्लस में VS। ठीक है, बढ़िया। टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस में स्वेप्ट वॉल्यूम, ऐसा कुछ होता है। ठीक, external combustion engine. In external combustion engine, the combustion of the fuel takes place outside the engine. Simple. For example, a steam engine, closed gas turbine, etc. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल steam engine, closed gas turbine, etc. For example, steam engine, closed gas turbine, etc. ये सब क्या है, एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन है। ठीक है, देखो फर्नेस बर्निंग ऑफ फ्यूल, मतलब बाहर किसी भट्टी में या फिर हम लोग फ्यूल को जलाएंगे। ठीक है, जलाएंगे। ठीक है, अब जलाने से क्या होगा, उससे हीट निकलेगा, हीट हमारा जाएगा बॉयलर में, हीट हमारा जाएगा बॉयलर में। अब बॉयलर जो है जाएगा ट्रांसपॉन्डर में, ट्रांसपॉन्डर से जाएगा कंडेंसर में, फिर CVFTP गुड। ठीक है, CVFTP, TCP। ओके ओके, so in external combustion engine, the combustion of the fuel takes place outside the engine। बढ़िया, जैसे स्टीम इंजन, क्लोज गैस टरबाइन एक्सेट्रा, सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे फर्नेस या फिर बर्निंग ऑफ फ्यूल आउटसाइड होगा, जैसे मैंने बताया, फिर वो बॉयलर में जाएगा, बॉयलर जाएगा, फिर ट्रांसपॉन्डर में जाएगा, ट्रांसपॉन्डर से कंडेंसर में जाएगा, कंडेंसर में प्रेसिपिटेशन होगा, क्या होगा, पी होगा। ठीक है, बढ़िया।
ठीक है। इन एक्सटर्नल कंबक्शन इज द कंबक्शन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस आउटसाइड द इंजन। सो फर्स्ट थिंग दूसरा स्टीम इंजन क्लोज गैस टर्बाइन। इसमें देखो क्या मैं बताता हूँ देखो, कंडेंसर और ये हो गया हमारा, ठीक है। ये देखो फर्नेस है, बोले तो बर्निंग ऑफ फ्यूल, बर्निंग ऑफ फ्यूल, ठीक है। हम देखो इससे क्या निकलेगी, हीट, हीट निकलेगी तो जाएगी कहाँ, बॉयलर में। कहाँ जाएगी, बॉयलर में। और जब बॉयलर में गए तो ट्रांसपोंडर में जाएगा, ट्रांसपोंडर के बाद कंडेंसर में जाएगा, कंडेंसर मतलब क्या होगा, प्रेसिपिटेशन जो कुछ भी है इसमें जाएगा, ठीक है। ठीक है। ठीक है। देखो बाहर फ्यूल बर्न हो रहा है, ठीक है, बाहर फ्यूल बर्न हो रहा है तो उससे हीट निकल रही है, हीट हमारी जाएगी कहाँ, बॉयलर में। बॉयलर उसे ट्रांसपोंडर को भेजेगा, ट्रांसपोंडर ट्रांसपोंड करके हमें कंडेंसर को भेज देगा, कंडेंसर फिर हमें भेज देगा पी को, पी को और क्या कुछ होगा, पी हमारा अगेन बॉयलर को भेजेगा। तो इसे सो प्रोसेस विल बी रिपीटेड। Difference between internal combustion engine and the external combustion engine. External combustion engine क्या होता है, combustion of the fuel outside the engine. Internal combustion engine, combustion of fuel inside the engine, ठीक है। बल्कि due to the presence of auxiliary apparatus like boiler and condenser, ठीक है। बल्कि due to the presence of auxiliary apparatus like boiler and condenser, ठीक है। क्या है देखो, combustion of fuel is outside the engine, combustion of fuel is outside the engine, ठीक है, बढ़िया। सो बल्कि due to the presence of auxiliary apparatus like boiler and condenser, ठीक है, ठीक है। सो बल्कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिलरी apparatus like boiler and condenser, इसलिए क्या हो, क्योंकि बहुत सारे ऑक्सिलरी apparatus का यूज होता है, तो इसलिए कंबक्शन क्या होता है, बल्कि होता है एंड नॉट यूज, ठीक है, बढ़िया। हाई रेशियो ऑफ वेट टू पावर आउटपुट, एक्सटर्नल में क्या होगा, वेट टू पावर आउटपुट एंड हाई रेशियो होगा ही, और ऐसे लो रेशियो ऑफ वेट टू पावर आउटपुट, लो रेशियो वेट टू पावर आउटपुट से है। It can use cheaper fuels including solid fuels. It can use cheaper fuels including solid fuels. High grade fuels are used with proper filtration. ठीक है, high grade fuels are used with filtration. ठीक है, बढ़िया। देखो it can use cheaper fuels, ठीक है, including solid fuels. High grade of fuels are used with proper filtration. अच्छा, higher requirement of water for dissipation of heat. higher requirement of Higher requirement of water for dissipation of heat.
ठीक है। It can use cheaper fuels in fuels including solid fuels. High grade fuels are used with proper filtration. Higher requirement of water for dissipation of heat. ठीक है, बढ़िया। Okay, yeah, right. It can use cheaper fuels including solid fuels. Higher requirement of water for dissipation of heat. क्या होता है, आग को बुझाने के लिए, फिर आग को डिसिपेट करने के लिए हाई रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूल वाटर। ठीक है, बढ़िया। तो हायर रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर डिसिपेशन ऑफ हीट। ठीक है। एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन में क्या होता है, हाई रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर द डिसिपेशन ऑफ हीट। इंटरनल में क्या होता है, लेसर रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, पानी का बहुत कम यूज़ होता है। ठीक है। और लोअर एफिशिएंसी, कम एफिशिएंसी होती है, जबकि इंटरनल कंबक्शन इंजन की जो एफिशिएंसी होती है बहुत ही हाई होती है। ऐसा साइलेंट ऑपरेशन ड्यू टू द आउटसाइड कंबक्शन। एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन में क्या होता है, इंटरनल कंबक्शन के अंदर क्या होता है, साइलेंट ऑपरेशन होता है, क्योंकि जो बर्निंग है तो आउटसाइड होती रहती है ना। साइलेंट ऑपरेशन ड्यू टू आउटसाइड बर्निंग, वेरी नॉइसी ऑपरेटेड इंजन। ठीक है। ऐसे इंजन क्या होगा कि बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। बढ़िया। एडवांटेज ऑफ एन इंटरनल कंबक्शन इंजन। ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ एन आईसी इंजन। तो दीज आर द फॉलोइंग एडवांटेजेस ऑफ एन आईसी इंजन। पहला है मैकेनिकल सिंप्लिसिटी। फर्स्ट वन इज द मैकेनिकल सिंप्लिसिटी। और दूसरा है हमारा लो इनिशियल कॉस्ट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर। एडवांटेज ऑफ एन आईसी इंजन। आईसी इंजन की एडवांटेज की बात चल रही है। पहला है कि मैकेनिकल सिंप्लिसिटी होती है। दूसरा होता है कि लो इनिशियल कॉस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ठीक है। तो these are the following advantages of an IC engine. मैकेनिकल सिंप्लिसिटी होती है, लो इनिशियल कॉस्ट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर। सही, हाई एफिशिएंसी एंड एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन। ठीक है। हाई एफिशिएंसी एंड एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन ऑब्वियसली हो सकता है। पावर टू वेट रेशियो इज हाई। पावर टू वेट, ठीक है। सो पावर टू वेट रेशियो इज हाई, से वेट टू पावर रेशियो ऑब्वियसली कम होगा, इसका वेट टू पावर रेशियो कम होगा। बट पावर टू वेट रेशियो ज़्यादा होगा, हाई। वेरी सुटेबल फॉर स्मॉल पावर रिक्वायरमेंट एप्लीकेशंस।
very suitable for small power requirement applications, small power requirement applications, ठीक है। और स्टार्टिंग टाइम इज़ वेरी लेस, स्टार्टिंग टाइमिंग का बहुत कम है। क्या है? स्टार्टिंग टाइम इज़ वेरी लेस, रिक्वायर्स लेस मेंटेनेंस, ठीक है। इसका हम लोग ज़्यादा मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक बार ले लिया तो ले लिया, खत्म बात, ठीक है। बढ़िया। अच्छा, डिसएडवांटेजेस ऑफ एन आईसी इंजन, आईसी इंजन का एडवांटेज पर डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस है कि वैरायटी ऑफ फ्यूल्स दैट कैन बी यूज्ड इज लिमिटेड टू वेरी फाइन क्वालिटी गैसेस एंड लिक्विड फ्यूल्स, फ्यूल यूज इज़ वेरी कॉस्टली एंड गैसोलीन और डीजल, ये फ्यूल यूज़ क्या होती है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली, इंजन emissions are generally high compared to external combustion engine, मतलब क्या कहते हैं उसे, इंजन इंजन emissions भी ज़्यादा है, are generally high compared to external combustion engine, not suitable of large scale power generation, not suitable of large scale power generation, in case of reciprocating thermal combustion type noise is a generator due to function, in case of reciprocating, ठीक है। बढ़िया, आप देखो, इंजन emissions जनरली हाई कंपेयर टू एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन। हम लोग पढ़े हैं क्या डिसएडवांटेजेस ऑफ एन आईसी इंजन, आईसी इंजन के डिसएडवांटेजेस क्या है? तो वैरायटी फ्यूल दैट कैन बी यूज्ड इज लिमिटेड टू अ वेरी फाइन क्वालिटी गैसेस एंड लिक्विड फ्यूल, फ्यूल यूज्ड इज वेरी कॉस्टली लाइक गैसोलीन और गैसोल डीजल, इंजन emissions are generally high, ठीक है। Engines injured emissions are generally high compared to external combustion engine, ठीक है। Engine emissions are generally high compared to external combustion engine, ठीक है। Engine emissions are generally high due to external combustion engine, not suitable for large scale power generation, not suitable for large scale power generation, or in case of ठीक है। बढ़िया। Not suitable for large scale power generation, in case of reciprocating internal combustion noise is generated due to detonation, in case of reciprocating, ठीक है, internal combustion noise is generated all to destination, all to detonation, क्लासिफिकेशन ऑफ एन आईसी इंजन, आईसी इंजन की क्लासिफिकेशन की बात चल रही है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रोक यूज के बेस पर क्या होता है, टू स्ट्रोक इंजन, फोर स्ट्रोक इंजन, टू स्ट्रोक साइकिल इंजन, फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन, टू स्ट्रोक साइकिल इंजन, फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन, ऑन द बेसिस ऑफ साइकिल यूज, ठीक है। बढ़िया। सो ऑन द बेसिस ऑफ साइकिल यूज के बेस पर तीन प्रकार का होता है, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और पेट्रोल साइकिल, सॉरी डीजल साइकिल और ड्यूल साइकिल इंजन, ठीक है। क्या क्या तीन प्रकार होता है, ऑटो साइकिल इंजन, दूसरा होता है डीजल साइकिल इंजन, तीसरा होता है ड्यूल साइकिल इंजन, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ फ्यूल यूज, तो फ्यूल कितने प्रकार का यूज होता है, पहला होता है पेट्रोल इंजन, दूसरा डीजल इंजन, तीसरा गैस इंजन, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, गैस इंजन, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ इग्निशन मेथड, इग्नाइट कैसे करते हैं उसमें,
CI and SI. ठीक है. So on the base of types of fuel used के बात करें तो पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, गैस इंजन. On the base of types of ignition method, spark ignition, compression ignition, spark ignition, and the compression ignition. On the base of types of cooling system used, कूलिंग सिस्टम बात करें तो एयर कूल्ड इंजन यूज होते हैं और वाटर कूल्ड इंजन. ऑन द बेसिस नंबर ऑफ सिलेंडर्स यूज, सिंगल सिलेंडर इंजन, मल्टी सिलेंडर इंजन, सिंगल सिलेंडर इंजन, मल्टी सिलेंडर इंजन. क्लासिफाई द इंटरनल कंबशन इंजन बेस ऑफ IYD रेशियो, लेंथ वर्सेस डेप्थ. ठीक है. ठीक है, बढ़िया. On the basis of number of cylinders used, single cylinder engines and multi cylinder engines. Classification the IC engine on the basis of length by diameter ratio. ठीक है. Classify the IC engine on the basis of length by diameter ratio. ठीक है. लॉन्ग स्ट्रोक इंजन में क्या होता है? These engines have a relatively long ears. ठीक है. Classification the IC engine on the basis of length by diameter ratio. Long stroke engine. These engines have a relatively long stroke compared to the bore diameter. These engines have a relatively long rope due to the presence of 150 milliliter. On the basis of number of cylinder used, तो ठीक है, बढ़िया. So on the basis of number of cylinders used, single cylinder engine or multi cylinder engine. ठीक है, बढ़िया. These engines have already long stroke compared to the voice diameter. ठीक है, बढ़िया बढ़िया. तो मुझे क्लासिफिकेशन था IC इंजन ऑन द बेस ऑफ L/D रेशियो और लॉन्ग स्ट्रोक इंजन्स में दी इंजन्स हैव रिलेटिवली लॉन्ग स्ट्रोक कंपेयर टू द बोर डायमीटर. ठीक है, बढ़िया. तो लॉन्ग स्ट्रोक इंजन्स में क्या होगा कि दीज इंजन्स हैव रिलेटिवली लॉन्ग स्ट्रोक. ठीक है, कंपेयर टू द बोर डायमीटर. These engines have a relatively long stroke compared to the bore diameter, have an L/D ratio greater than 1. Square engines का L/D ratio is equal to 1 होता है. So square engines have L/D ratio is close to 1, which means the stroke length is roughly enough to the bore diameter.
ठीक है, बढ़िया। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। ऑन द बेसिस सिलेंडर चेंज, ठीक है। क्लासिफिकेशन था इंटरनल कंबक्शन इंजन ऑन द बेसिस एलपीडी रेशियो। लॉन्ग स्ट्रोक क्या होता है? एलपीडी रेशियो ग्रेटर देन 1 होता है। ये इंजन हैव ऑलरेडी लॉन्ग स्ट्रोक कंपेयर टू द प्रीवियस वन। और बात करें कि स्क्वायर इंजन क्या होता है? रिलेटिव एरर इज वेरी क्लोज टू 1। भगवान। जी नहीं खेमन जी और वीरे की हालचाल? सब बढ़िया भाई, सब बढ़िया। एग्जाम्स हैं यार, उसी की तैयारी चल रही है भाई, है ना। लॉन्ग स्ट्रोक इंजन बार बार तो पढ़ा। स्क्वायर इंजन have LYD radius close to 1, which means the stroke is roughly equal to the bore diameter. It means the stroke is roughly equal to bore diameter. And short stroke engine क्या होता है? These engines have a shorter stroke compared to the bore diameter. These engines have a shorter stroke as compared to the मतलब shorter stroke compared to the bore diameter. Have an LYD radius less than 1. Basically as volume, shaft volume, top back center, bottom back center. On the basis of types of diameter position, on the basis of types of different position of cylinder, on the basis of types of different position of cylinder, horizontal cylinder, vertical cylinder, inclined cylinder engines, horizontal cylinder engines, electrical cylinder engines, और inclined में बात करें ठीक है, बढ़िया। ठीक है जी। Main components of an internal combustion engine. इंटरनल कंबक्शन इंजन कुछ ऐसे होता है। क्या होता है देखो, सबसे पहले क्या होगा, एक एग्जॉस्ट वाल्व है, एग्जॉस्ट वाल्व और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड एग्जॉस्ट वाल्व, ठीक है।
और इनलेट मैनिफोल्ड इनलेट वाल्व। ठीक है, हम बढ़िया। तो इनलेट वाल्व इनलेट मैनिफोल्ड, एग्जॉस्ट वाल्व एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, स्पार्क प्लग, सिलेंडर, Gudgeon pin, and the ठीक है। अच्छा, गुडजिन पिन ए है, सिलेंडर ए है, पिस्टन ए है, साइबर ब्लॉक ए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। साइबर ब्लॉक, गुडजिन पिन, पिस्टन, सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर है, पिस्टन है, गुडजिन पिन है, सिलेंडर ब्लॉक है, और क्रैंक है, क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक ए है, और कनेक्टिंग रॉड है, और होता है क्रैंक पिन, क्रैंक पिन। ठीक है, क्रैंक पिन। Okay, so we have just successfully completed 1 hour of study now, and our remaining 2 hour of study has remained. Just be focused on that. Okay, and till then, we'll say bye bye. ठीक है, बढ़िया। तो बस इनलेट मैनिफोल्ड, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व, स्पार्क प्लग। ठीक है, मतलब सिलेंडर, सिलेंडर। ठीक है, बढ़िया। तो क्रैंक पिन हो गया, क्रैंक शाफ्ट ये हो गया, ये हो गया। क्रैंक शाफ्ट बेसिकली क्या होगा, रॉड होगा। ठीक है, तो क्रैंक शाफ्ट हो गया, क्रैंक पिन हो गया। ठीक है, बढ़िया।
सो we have just successfully completed 1 hour of study एंड फिर लेते हैं भाई 3 मिनट 2 मिनट के ब्रेक में जाता हूँ, थोड़ा जैकेट पहन लेता हूँ और थोड़ा पानी भर के पास पी लेता हूँ, ठीक है। जस्ट टेक अ ब्रेक ऑफ 2 minutes or 3 minutes. Till then, keep learning, keep exploring. I'm back just in 2 minutes.
So our 2 minutes of break has just ended. Okay. थोड़ा तो ख्याल कर साढ़े दिल लोहे दा तने सजना साढ़े दिल लोहे दा तने सजना ठीक है तो इतने ही सारा काम हो जाने का ये तो कुछ एक्स्ट्रा बन जाता है कैसे बनाते हैं देखो ठीक तो इसको नेक्स्ट वीक बनाते हैं ठीक है देखो ये होगा ना उसके बाद फिर हो जाएगा हमारे यहाँ से ऐसा कुछ ऐसे हो जाएगा ठीक है ऐसे हो जाए फिर यहाँ बना दो क्या दिक्कत है बना दो ऐसे
आज बहुत जल्दी अरे 8, हाँ मतलब बज गए। तो एक यहाँ पर ऐसे देखो क्या इनलेट वाल्व है, एग्जॉस्ट वाल्व है, ठीक है। इनलेट मैनिफोल्ड, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, इनलेट मैनिफोल्ड, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, सॉरी, इनलेट मैनिफोल्ड, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व, सिलेंडर, ठीक, सिलेंडर हो गया, स्पार्क प्लग, सिलेंडर हो गया, और बाकी ये क्या हो गया हमारा ओरिजिन पिन, पिस्टन, सिलेंडर है, पिस्टन है, पिस्टन है, पिस्टन, ओरिजिन पिन, क्या ओरिजिन पिन, ओरिजिन पिन, हो गया मेरा व्रत पूरा। सब पानी पी ओम नमः शिवाय। आजल जो भी कल महाशिवरात्रि का व्रत था, 6 बज गए हैं, आपका व्रत कंप्लीट हो गया है, तो आप पानी पी सकते हैं, ठीक है। अभी याद दिला दो, सोच रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। सो गोल्डन पिन है, पिस्टन है, क्या है, सिलेंडर ब्लॉक, ये सिलेंडर है, और सिलेंडर ब्लॉक क्या होता है मतलब क्रैंक है,
क्रैंकशाफ्ट है, क्रैंकशाफ्ट है, दिस इज क्रैंक पिन है, ठीक है। कनेक्टिंग रॉड है, क्रैंक है, क्रैंकशाफ्ट है, कनेक्टिंग पिन है, क्रैंक है, क्रैंक पिन है, कनेक्टिंग रॉड है, ओरिजिन पिन है, पिस्टन, सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर ब्लॉक है, क्या सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर ब्लॉक है, ठीक है, बढ़िया। थोड़ा तो ख्याल कर, काटा दिल लोहे दा तो नहीं समझिया, दिल लोहे दा तो नहीं समझिया। ओके, सो सिलेंडर ब्लॉक क्या होता है? द फाउंडेशन ऑफ द इंजन हाउसिंग द सिलेंडर वेयर द कंबक्शन प्रोसेस अकर्स, इट इज मेड ऑफ कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम। क्या होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम से बना होता है। द फाउंडेशन ऑफ द इंजन हाउसिंग द सिलेंडर वेयर द कंबक्शन प्रोसेस अकर्स, ठीक है। क्या? द फाउंडेशन ऑफ द इंजन हाउसिंग द सिलेंडर वेयर द कंबक्शन प्रोसेस अकर्स, ठीक है, बढ़िया। द फाउंडेशन द इंजन की फाउंडेशन जो है ना, देखो सारा सिलेंडर ब्लॉक है, हाउसिंग द सिलेंडर एक छाया प्रदान करता है घर को, वेयर द कंबक्शन प्रोसेस, जहाँ पे कंबक्शन प्रोसेस होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम, ठीक है। क्या होता है? आयरन या फिर एल्यूमिनियम से बना होता है, कास्ट आयरन या फिर एल्यूमिनियम से बना होता है, बढ़िया। तो सिलेंडर्स क्या होता है? सिलेंडर्स होता है these are cylindrical chambers where the combustion of fuel and air takes place. These are the cylindrical chambers where the combustion of fuel and air takes place. It is made up of combustion of fuel and air. It is made of cast iron or aluminum. सिलेंडर भी कास्ट आयरन या फिर एल्यूमिनियम का बना होता है। पिस्टन क्या होता है? पिस्टन are cylindrical components that move up and down side inside each cylinder. That move up and down inside each cylinder. The pressure created by the combustion process देखो, ठीक है, बढ़िया। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। पिस्टन क्या होता है? पिस्टन्स आर सिलिंड्रिकल कंपोनेंट्स दैट मूव अप एंड डाउन इनसाइड ईच सिलेंडर। Pistons are cylindrical components that move up and down inside each cylinder. The pressure created by the combustion process forces the piston down.
ठीक है। पिस्टन क्या होता है? पिस्टन है सिलेंडर कंपोनेंट दैट मूव अप एंड डाउन इनसाइड इस सिलेंडर, ठीक है। द प्रेशर क्रिएटेड बाय द कंबक्शन प्रोसेस फोर्सेस द पिस्टन डाउन, कन्वर्टिंग द प्रेशर इनटू मैकेनिकल मोशन. It is made up of aluminum alloy sometimes. Crankshaft, ठीक है. The crankshaft is a rotating shaft connecting to the piston through connecting rod. ठीक है, बढ़िया. जी futuristic thing. This first of all, welcome to our stream and प्रेयर नहीं कर रहे हैं, वो थोड़ा मनन कर रहे हैं. आंख बंद करके मन में रिवाइज किया जा रहा है. ठीक है, इसलिए आप खोल के रिवाइज कर सकते हैं, बट जब डीप फोकस की ज़रूरत होती है ना, तो मन में रिवाइज किया जाता है आंख बंद करके. ठीक, तो क्रैंकशाफ्ट क्या था? The crankshaft is a rotating shaft connecting to the piston through the connecting rods. It converts the linear motion of the piston into rotational motion, which is then used to drive the wheels of the vehicle. It is made up of forged steel or nodular cast iron. The crankshaft is a rotating shaft connected to the piston. The crankshaft is a rotating shaft connected to the piston, piston, through connecting rods. It converts the linear motion of the piston. Into rotational motion, which is then used to drive the wheels of the vehicle. It is made up of forged steel or nodular cast iron. Valve, camshaft. बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से यूज करना है टेक्निक. Camshaft क्या होता है? Camshaft controls the opening and closing of intake and exhaust valve. Camshaft controls the opening and exit of exhaust valve. Camshaft basically I think जो इनलेट वाल्व है, एग्जॉस्ट वाल्व है, कैमशाफ्ट होता है. कौन मतलब टुगेदर में आई थिंक सो. द कैमशाफ्ट कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द इंटेक एंड एग्जॉस्ट वाल्व्स. It is made of steel or cast iron. It is made up of steel or cast iron. It is synchronized with the crankshaft and is responsible for timing the engine's valve operation. It is synchronized with the crankshaft. ठीक है, बढ़िया. The camshaft controls the opening and closing of the intake and exhaust valve. It is
made of steel or cast iron. It is synchronized with the crankshaft and is responsible for timing the engine's valve operation. ठीक है, it is synchronized with the crankshaft and is responsible for the timing of engine's valve operation. Valves क्या होता है? Valves are responsible for allowing the intake of air. Valves are responsible for allowing the intake of air and fuel into the combustion chamber and expelling the exhaust gases after combustion. These are made of stainless steel. ये कौन सा व्रत तोड़ने का तरीका है? कुछ तो खाएंगे या का नाश्ता तो करेंगे तो इसलिए भगवान, राधे राधे. Walls are responsible for allowing the intake of air and fuel into the combustion chamber and expelling the exhaust gases after combustion. These are made of stainless steel. Combustion chamber. So, the area inside the cylinder where the air and fuel mixture is ignited by a spark. Combustion chamber. The area inside the cylinder where the air and fuel mixture is ignited by a spark plug or by compression. By spark plug in petrol engine and or by compression in diesel engine. स्पार्क प्लग क्या होता है? In gasoline engines, spark plugs are used to ignite the air-fuel mixture in the combustion chamber, creating the controlled explosion that drives the piston down. ठीक है, बढ़िया. आप देखो, बताता हूँ. ठीक है, spark plug in gasoline engines. Spark plugs are used to ignite the air-fuel mixture in the combustion chamber, creating the controlled explosion that drives the piston down. It is made up of ceramic insulator with metal electrodes. ठीक है. अच्छा, intake and exhaust manifolds. These are pathways that direct the intake air and fuel mixture into the cylinders and expel the exhaust gases out of the engine respectively. Fuel injection carburetor system. The system responsible for mixing air and fuel in the right proportion before it enters the combustion chamber.
ठीक है, बढ़िया। तो intake and exhaust manifolds, these are pathways that direct the intake air and fuel mixture into the cylinder and expel the exhaust gases out of the engine respectively. फ्यूल इंजेक्शन एवं कार्बोरेटर सिस्टम क्या होता है? ठीक है, फ्यूल इंजेक्टर कार्बोरेटर द सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर मिक्सिंग एयर एंड फ्यूल मिक्सचर इन द right proportion before it enters the combustion chamber. Older engines are ठीक है, the system responsible for mixing air and the fuel रिलीव करवा। ठीक है, अगला इंटरनल कंबक्शन इंजन टर्मिनोलॉजी। ठीक है, बढ़िया। आप देखो, टॉप डेक सेंटर, बॉटम डेक सेंटर, IC इंजन टर्मिनोलॉजी। टॉप डेक सेंटर का होता है, it is the position of the piston which is when it is farthest from the crankshaft. It is the farthest position of the system when it is from when the ठीक है, क्या मैं बताता हूँ क्या होता है। ठीक है, इट इज़ टॉप डेक सेंटर जो होता है, इट इज़ द मैक्सिमम, इट इज़ द पोजीशन ऑफ द पिस्टन एंड इट इज़ फारदेस्ट फ्रॉम द क्रैंकशाफ्ट। बॉटम डेक सेंटर क्या होता है, इट इज़ द पोजीशन ऑफ द पिस्टन एंड इट इज़ क्लोजेस्ट टू द क्रैंकशाफ्ट, क्लोजेस्ट ऑन। यस, ठीक है। ठीक है, बढ़िया। अब देखो, मैं बताता हूँ। स्ट्रोक क्या होता है, पिस्टन मूव्स फ्रॉम टॉप डेक सेंटर टू बॉटम डेक सेंटर, बॉटम डेक सेंटर टॉप डेक सेंटर, देन टू इज नोन एज स्ट्रोक। ठीक, अच्छा, स्ट्रोक लेंथ क्या होती है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टॉप डेक सेंटर बॉटम डेक सेंटर, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप डेक सेंटर बॉटम डेक सेंटर, दैट इज नोन एज स्ट्रोक लेंथ। वो बोर क्या था, इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, डायमीटर ऑफ द डिस्टेंस फेस। ठीक है, बढ़िया। अब देखो, सो इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर और डायमीटर ऑफ द डिस्टेंस फेस। ठीक है, बढ़िया। इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर और डायमीटर ऑफ द पिस्टन फेस।
सबसे सब बड़ा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आईसी इंजन टर्मिनोलॉजी की बात की जाए, हम लोग जो पढ़ रहे थे और कुछ प्रॉब्लम की पॉइंट थे, ठीक है, सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। ना से टाइम की मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, बढ़िया। देखो मैं बताता हूँ, सॉफ्ट वॉल्यूम क्या होता है, बी एस सॉफ्ट वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम। सॉफ्ट वॉल्यूम होता है कि वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय द पिस्टन एज इट ट्रेवल्स थ्रू वन स्ट्रोक। क्या है? ठीक है जी सर। वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम डिस्प्लेस बाय द पिस्टन एज इट ट्रेवल्स थ्रू वन स्ट्रोक पर जब होता है, जो वॉल्यूम डिस्प्लेस होता है उसे हम लोग कहते हैं कि सॉफ्ट वॉल्यूम बी एस इज इक्वल टू पाई बाई 4 डी स्क्वायर। ठीक है, तो राइट एक साइकिल मतलब क्या होता है, क्लियरेंस बाय इट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड पिस्टन इज दैट इट इज therefore it is मिनिमम वॉल्यूम। ठीक है, बढ़िया। अब देखो, अब देखते हैं ना, कंप्रेशन रेस क्लियरेंस वॉल्यूम तो पता है क्या हो गया। क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम सिलेंडर एंड पिस्टन इज एट TDC therefore it is मिनिमम वॉल्यूम। ठीक है, जब जब क्या होता है कि जब हमारा पिस्टन क्या होता है, टॉप डेड सेंटर पर होता है, मिनिमम वॉल्यूम कहेंगे कि हमारा जो मतलब हमारा क्या है आप, ठीक है, जैसे वॉल्यूम सिलेंडर एंड द पिस्टन इज एट TDC therefore it is मिनिमम वॉल्यूम। कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिफोर कंप्रेशन टू द वॉल्यूम ऑफ आफ्टर कंप्रेशन। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन एंड आफ्टर कंप्रेशन। बिफोर कंप्रेशन क्या हो गया, BC प्लस BS, आफ्टर कंप्रेशन BC हो जाएगा। 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन को डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, 4 स्ट्रोक इंजन। If a cycle of an engine is completed in 4 stroke of the piston or 2 revolution of the crank is known as a 4 stroke engine. If a cycle of an engine is completed in 4 stroke of the piston, ठीक है, बट ठीक है, देखो if a cycle of an engine is completed 4 stroke of the piston, 2 revolution, the crank is known as 4 stroke engine.
Cycle consists of processes like intake, compression, exhaust, expansion, exhaust. Yeah. ये क्या हुआ? If a cycle of an engine is completed in 4 stroke of the piston, the 2 revolutions of the crank is known as a 4 stroke engine. ठीक है, बढ़िया. दो % बैटरी बची. भैया भाई चार्जर देना. 2% बैटरी बची. थैंक यू. ठीक है, बढ़िया. देखो, इफ अ साइकिल ऑफ एन इंजन कंप्लीटेड इन 4 स्ट्रोक ने अभी 2 स्ट्रोक ही पड़ेगा, तो 2 स्ट्रोक ही पढ़ लीजिएगा. 4 स्ट्रोक ही पड़ेगा. चल जाएगा बेसिकली. So if a cycle of an engine is completed in 4 stroke of the piston or 2 revolution on the crank is known as a 4 stroke engine. ठीक है, बढ़िया. So if a cycle of an engine is completed in 4 stroke of the piston, 4 stroke of the piston every 2 revolution on the crank is known as 4 stroke engine. Cycle consists of processes like intake, compression, expansion, exhaust. Intake, compression, expansion and exhaust. क्या intake, compression, expansion and exhaust. Intake, compression, expansion and exhaust. 4 stroke engines may be SI or CI. 4 stroke engines may be SI or CI. 4 stroke engine may be SI or CI. SI engine work on Otto cycle. CI and CI work on material cycle. Yeah. ठीक है जी. तो cycle consists of process like intake, compression, expansion and exhaust. 4 stroke engines may be SI or CI. ठीक है, बढ़िया. तो इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व, टॉप डेक सेंटर, बॉटम डेक सेंटर, वो ऑनलाइन.
ठीक है। 4 स्ट्रोक इंजन में भी एस आई और सी आई। 4 स्ट्रोक इंजन जो होता है ये एस आई इंजन भी हो सकता है, सी आई इंजन भी हो सकता है। ये एस आई इंजन वर्क्स ऑन ऑटो साइकिल, सी आई इंजन वर्क ऑन डीजल साइकिल। Working of 4 stroke SI engine, that is a petrol engine, ठीक है। Working of 4 stroke SI engine, that is a petrol engine. Working of 4 stroke SI engine, that is the petrol engine. पेट्रोल इंजन जो होता है हमारा 4 स्ट्रोक होता है, ठीक है। तो वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक SI इंजन पेट्रोल ऐसा कुछ होता है। सबसे पहले क्या होता है, 4 स्ट्रोक SI इंजन है वरना है ना, तो कुछ ऐसा होगा। फंक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक एंड द वर्किंग स्ट्रोक एंड द एग्जॉस्ट स्ट्रोक सॉरी फंक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, वर्किंग स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। बढ़िया। वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक SI इंजन, दैट इज द पेट्रोल इंजन, ठीक है। देखो क्या होगा, स्पार्क प्लग है, इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व, एयर फ्यूल का मिक्सर आया अंदर, एयर फ्यूल का मिक्सर आया अंदर, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बढ़िया। सो इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व, ठीक है, स्पार्क प्लग, ECCR, कनेक्टिंग रॉड, ठीक है, ठीक है, राइट, बढ़िया। अब देखो ऐसे है ना, इलेक्ट्रिक रॉड फंक्शन स्ट्रोक, इसमें क्या होगा, इसमें जब हम लोग सब कुछ डाले, ठीक है, बढ़िया। देखो पहला स्टेप ये होता है हमारे क्या, संक्शन स्ट्रोक। कौन सा स्ट्रोक होता है, संक्शन स्ट्रोक। संक्शन स्ट्रोक में ऑब्वियसली फ्यूल अंदर आया। दूसरा स्ट्रोक कंप्रेशन स्ट्रोक, अब जब अंदर आएगा फ्यूल तो उस नीचे जाएगा कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद क्या हो गया, फिर ऊपर होगा, इट इज़ अ वर्किंग स्ट्रोक एंड द फोर्थ वन इज़ अ एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक है फोर्थ वन, ठीक, गैसेस ऐसे एक्सपेंड हो जाएंगे और एग्जॉस्ट वाल्व बाहर निकल जाएगा। ठीक है, PV एंड TS डायग्राम फॉर ऑटो साइकिल।
हम्म, PV and TS diagram for auto cycle. ठीक है. So PV and TS diagram for auto cycle SI इंजन. अब देखो PV फॉर ऑटो साइकिल बोलते हैं SI इंजन के लिए. SI इंजन के लिए ऐसे होगा और प्रेजेंट ट्रॉफी के लिए ऐसे हो जाएगा. अपोजिट. ठीक है, बढ़िया. सो PV एंड TS डायग्राम फॉर ऑटो साइकिल. ऑटो साइकिल की बात हम लोग करते हैं. किसकी बात करते हैं? ऑटो साइकिल की बात करते हैं. सबसे पहले क्यों हीट. देखो प्रेशर वॉल्यूम के बीच में ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा. कैसे बन जाएगा? कुछ ऐसे बन जाएगा. देखो प्रेशर वॉल्यूम. क्या प्रेशर और वॉल्यूम. प्रेशर एंड वॉल्यूम. तो अब इसलिए क्यू एस. क्यू हीट आई. हीट रिजेक्शन. रिजेक्ट यहाँ से हो गई. ठीक है. वॉल्यूम. ठीक है, बढ़िया. देखो प्रेशर वॉल्यूम. तो क्यू हीट आई और डायग्राम कुछ ऐसे होगा. ऐसे ही होगा. ऐसे ही होगा डायग्राम. ठीक है. क्यू हीट यहाँ देंगे हम लोग ना. देंगे तो देखो इसमें क्या हो जाएगा. PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है. ठीक है. PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है. 1 2 3 4 ऐसे चलेगा. 1 2 3 4. ठीक है. अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? ठीक है. क्या व्हाट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस? मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए. राम के नाम का मुझको रस चाहिए. ठीक है. PV. तो अब इसलिए QS. 1 2 3 4. तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फंक्शन स्टॉप. फर्स्ट स्टेप है फंक्शन स्टॉप. फंक्शन स्टॉप मतलब क्या है हमारा? एक वॉल्यूम हमारे कांस्टेंट तो हो जाएगा. वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा और फिर क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा. फंक्शन हो जाएगा. प्रेशर बढ़ता चला जाएगा. तो सबसे पहले हमारा था इतना. प्रेशर बढ़ता चला गया. प्रेशर बढ़ता चला गया. फिर ठीक. प्रेशर बढ़ता चला गया. संक्रांत प्रेशर बढ़ता चला गया. फिर
ठीक है। ये पी होगा हमारा कॉन्स्टेंट हीट रिजेक्शन क्यू एस हीट गिवन, एंड यहाँ से होगा हमारा हीट रिजेक्शन क्यू एस हीट गिवन हीट रिजेक्शन। ठीक है, बढ़िया। आप देखो, अच्छा, और यहाँ देखो प्रेशर और वॉल्यूम के जो ग्राफ तो बना लिया हमको, ये हम बनाते हैं टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच में, तो इसको थोड़ा ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच में बनाते हैं हम लोग, किसके बीच में? टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच में, तो ऐसे बन जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, बढ़िया। अब देखो बाकी क्या होगा, देखो इक्वल टू सी। ठीक है, तो पी वी और टी एस का यहाँ से डायग्राम बना लेंगे हम लोग, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे डायग्राम। अच्छा, वर्किंग ऑफ फोर स्ट्रोक साइंस है। The working of four stroke engine ignites involves uh, four stroke इनको इनटेक नहीं होना चाहिए, कंप्रेशन नहीं होना चाहिए, पावर नहीं होना चाहिए, एग्जॉस्ट होना चाहिए। ठीक है, these strokes are repeated in a condition cycle to produce power। These strokes are repeated in a continuous cycle to produce power। The working of a four-stroke spark ignition SI engine involves following strokes. First one is the intake, compression। ठीक है, बढ़िया। आप देखो ठीक है, the working of four-stroke SI engine involves four strokes: intake, compression, power exhaust, intake, compression, power exhaust। These strokes are represented in a continuous cycle to produce power। Intake stroke, piston moves from top deck center to bottom deck center। गोलू कुमार जी, वेलकम टू स्टूम 8 क्लास का फाइनल पेपर मीन समझाने क्या फाइनल पेपर। ठीक है, पिस्टन मूव फ्रॉम टॉप डेक सेंटर टू बॉटम डेक सेंटर। इनिशियल स्ट्रोक क्या होगा? पिस्टन विल मूव फ्रॉम टॉप डेक सेंटर टू बॉटम डेक सेंटर। इनलेट valve is opened and the exhaust valve is closed। Pressure inside the cylinder is reduced below the atmospheric pressure।
ठीक है। ठीक है, बढ़िया। आप देखो, ठीक है। इनलेट valve is opened and the exhaust valve is closed. Pressure current. ठीक है। Piston hose and product center for the inlet valve is opened and the exhaust valve is closed. Pressure inside the cylinder is reduced below the atmospheric pressure. Pressure inside the cylinder is reduced below the atmospheric pressure. The mixture of the air fuel is sucked into the cylinder. The mixture of air fuel is sucked into the cylinder and through the intake valve. The timing of the intake valve is controlled by the camshaft. The timing of the intake was controlled by the camshaft. ठीक है। राइट। ठीक है, बढ़िया। ठीक है जी। ठीक है, हम लोग क्या आना राइट, बढ़िया, कोई बात नहीं। Compression stroke piston moves up from bottom deck center to top deck center. What is difference between SI engine and CI engine? SI engine क्या होता है? It works on auto cycle or constant variable. ठीक है। Exhaust stroke piston moves from bottom deck center. After the exhaust stroke cycle repeats and the engine continues to operate as long as there is a supply of air to mixer and a spark to ignite it. ठीक है। It works on auto cycle or constant volume of heat addition.
ऐसा इंजन की बात करें तो इट वर्क्स ऑन ऑटो साइकिल, सी इंजन इट वर्क्स ऑन डीजल साइकिल, और कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ हीट एडिशन, कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ प्रेशर heat addition, constant pressure heat addition. During the intake of suction process, air and fuel are used. During the suction of air, during the intake of suction of air and fuel, yeah, it was an auto cycle or constant volume of heat addition. और सी इंजन की बात करते हैं, इट वर्क्स ऑन डीजल साइकिल और कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ हीट एडिशन, कांस्टेंट प्रेशर ऑफ हीट एडिशन. ठीक है. ठीक है. During the intake and the suction process, during the intake and the suction process, air and fuel are used. During the intake and suction process, CI में only air is used. The fuel used petrol, which is highly volatile. The fuel used petrol, which is highly volatile. Self-initial temperature is high. The fuel used is diesel, which is low volatile. Self-initial temperature is low. ठीक है. The fuel is supplied by carburetor. The fuel is supplied by injector. सीआई में क्या होता है? सीआई में होता है इंजन. इंजेक्टर के जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारे ब्लड में मतलब डाला जाता है. ठीक है. नहीं, ब्लड में नहीं यार, जो प्रोसेस होता है उसमें होता है. The maintenance cost is low, the maintenance cost is high. ठीक है, बढ़िया. तो the fuel used petrol, which is highly volatile, self-initial temperature is high, self-initial temperature is low. इसका हो जाएगा. The fuel is supplied by carburetor, the fuel is supplied by injector. The maintenance cost is low, SI का. The maintenance cost is high. ठीक है जी. So the fuel is supplied by carburetor, the fuel is supplied by injector. The maintenance cost is low, the maintenance cost is high. Service vehicles, then फीचर नहीं का बना देगा. Compression ratio is absolute.
ठीक है जी। ठीक है बढ़िया। ठीक है स्टार्टिंग आता मतलब देखो इट इज़ यूज्ड इन स्मॉल व्हीकल्स, इट इज़ यूज्ड इन हैवी व्हीकल्स. The compression ratio is 6 to 10, the compressor ratio is 16 to 22. तो SI engine basically diesel cycle और SI engine is basically petrol. ठीक है तो SI engine का that is used in small vehicles और CI engine का that is used in large vehicles, heavy vehicles. The starting up the engine is easy, the starting up the engine is difficult. It produces less noise, it produces more noise. ठीक है it produces less noise, it produces more noise. Lower thermal efficiency because of the high thermal efficiency. ठीक है बढ़िया. So it produces less noise. ठीक है अब देखो it produces less noise, it produces more noise. CI इंटरनल है तो ज़्यादा noise produce होता है. Produces thermal efficiency होता है.
ठीक है. Lower thermal efficiency because of the low compression ratio. ठीक है. High thermal efficiency because of the high compression ratio. सबसे से साइनस से एंजन रिएक्शंस हो गया. ठीक है. Which type of engine type typically produces NOx and participate in their exhaust phases. टू स्ट्रोक इंजन क्या होता है ये? ठीक है. ठीक है. सो टू स्ट्रोक वर्सेस फोर स्ट्रोक ऐसा इंजन. पहले टू स्ट्रोक तो पढ़ लेते हैं. तो टू स्ट्रोक ऐसा इंजन क्या होता है? टू स्ट्रोक इंजन क्या होता है? इफ अ साइकिल of an engine is completed in two stroke of the piston, one revolution of the crank is known as a two stroke engine. Cycle consists of like intake, compression, expansion and exhaust. Two stroke engines may be SI or CI. SI engines work on auto cycle, CI engine works on diesel cycle. Two stroke versus four stroke. ठीक है. क्या होगा देखो. As the piston moves from bottom dead center to progression. ठीक है. Intake and compression. The piston moves from bottom deck center to top deck center. Both transfer and exhaust ports are covered by the piston. Air-fuel mixture which is already transferred into the cylinder is compressed by the piston. Moving piston, the pressure and temperature increases at the end. Compression. As piston almost reaches the top dead center, the air-fuel mixture inside the cylinder is ignited by means of an electric power produced. ठीक है. बढ़िया. अब देखो. द बर्निंग गैसेस वर्किंग अप टू स्ट्रोक सी आई इंजन. वर्किंग अप टू स्ट्रोक सी आई इंजन. ठीक है. वर्किंग अप टू स्ट्रोक सी आई इंजन. The working of a two-stroke CI engine involves a simpler cycle compared to a four-stroke engine. The working of a two-stroke compression ignition to the working of a two-stroke CI engine involves a simpler cycle compared to a four-stroke engine. It completes one power cycle in just two strokes of the piston. It completes one power stroke in just two strokes of the piston.
ठीक है. The working of two-stroke compression engine involves some simple cycle compared to a four-stroke engine. It completes one power cycle in the ठीक है. It completes one power cycle in just ठीक है. अब देखो, it involves one power cycle in just two stroke of the piston. These engines are commonly used in small applications like motorcycles, scooters, etc. ये सब में हमें यूज होता है. ठीक है. It completes one power cycle in this two-stroke piston. These engines are commonly used in small applications like motorcycles, scooters, etc. These engines are commonly used in small applications like motorcycles, intake and compressions. Okay. ठीक है. The engines are commonly used in small applications like motorcycles, scooters, etc. The engines are commonly used in small applications like motorcycles, scooters, etc. ठीक है. अच्छा, फर्स्ट जब intake and compression, power and exhaust हो गया. ठीक है. The piston moves from bottom to center. Throttle center, both transfer and exhaust ports are covered by the piston. All air which is already transferred into the cylinder is compressed by moving piston. The pressure and temperature increases at the end of compression. Piston almost reaches at the top dead center. The fuel is injected into the hot compressed air inside the cylinder. ठीक है. The fuel mixes with the hot air and burns. भगवान. Scavenging क्या होती है? तो scavenging is a process of pushing exhaust gases out of cylinder. Scavenging is a process of pushing exhaust gases out of cylinder. Scavenging is a process of pushing exhaust gases out of cylinder. Out of the critical aspects of two-stroke engine design is scavenging, which involves replacing the exhaust gases. Yeah.
Yeah, so out of the critical aspect of two-stroke engine began the scavenging, which involves replacing the exhaust gases with fresh air fuel mixture to optimize combustion efficiency. Like this. Okay. Difference between four-stroke and two-stroke engine. Four-stroke was the four-stroke of the piston moves to revolution of the crankshaft and two revolution of the piston. Two-stroke of the piston involves one revolution of the crankshaft. One four-stroke in every two revolution of crankshaft. One four-stroke in each revolution of crankshaft. Power produces less power produces twice. Heavily flywheel. Heavier flywheel due to more uniform turning moment. Lightly well flywheel due to uniform turning moment. Lesser. Hello. ठीक है बढ़िया. So four stroke of the piston and two revolution of the crankshaft. ठीक है. अच्छा तो four stroke of the piston moves to revolution of the crankshaft. One four stroke in every two revolution crankshaft power produces less heavier flywheel due to uniform bindage. uh, ठीक है. ठीक है. The four stroke make a heavier flywheel due to non-uniform turning movement or lesser cooling and lubrication requirements. Contained valve and valve mechanism. Volumetric efficiency and thermal efficiency are high, but mechanical efficiency is low. ठीक है. इलेक्ट्रिक व्हीकल तो आने वाला है, बट बिफोर दैट इलेक्ट्रिक व्हीकल हमें इसको थोड़ा ख़त्म करना है. इसको ख़त्म करते हैं. ठीक है. लेट्स फोकस. सो टू स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन. देखो टू स्ट्रोक इंजन पता है.
to stock of the basic piston and one revolution of crankshaft, to stock of the piston and one revolution of the crankshaft, one power stroke in each revolution of crankshaft. Theoretical twice power. Lightly flywheel due to no more uniform turning movement. Lightly flywheel due to more uniform turning movement. ठीक है. Theoretical twice power. Internode cooling. ठीक है. ठीक है. Lightly flywheel due to more uniform turning moment, greater cooling and lubrication requirements, contain ports arrangement, volumetric efficiency and thermal efficiency are low, but mechanical efficiency is high. light and light and compact होता है, लाइट एंड कॉम्पैक्ट होता है. इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं हम लोग. इलेक्ट्रिक व्हीकल ठीक है, किस खास का इलेक्ट्रिक व्हीकल. तो देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल उसमें बैटरी लगेगी. ठीक है. फिर बैट मोटर इन सीरीज मोटर, फिर जनरेटर, फिल्टर, ट्रांसमिशन, बहुत सारी चीज़ें. ठीक है. An electric vehicle is a vehicle that uses one or more electric motor for propulsion. Electric vehicle is a vehicle that uses one or more electric motor for propulsion. That uses one or more electric vehicle for propulsion. The electric motors are the replacement of ICE. The electric motors are replacement of electric internal combustion engine. Main components of electric vehicles are बैटरी, इलेक्ट्रिक मोटर, बैटरी चार्जर, पावर इलेक्ट्रिक कन्वर्टर. क्या बैटरी, इलेक्ट्रिक मोटर, बैटरी चार्जर and power electric converter. Electric vehicles have gained popularity in recent years due to their potential to reduce greenhouse gas emissions and dependence on fossil fuels. ठीक है. एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या है. Environmental benefits. Electric vehicles produces zero emissions, which helps to reduce air pollution and greenhouse gas emissions, leading to improved air quality and a healthy environment. Electric vehicles. पहला environmental benefit. Electric vehicle produces zero emissions, which helps to reduce air pollution and greenhouse gas emissions, leading to improved air quality and a healthy environment. Energy efficiency. Electric vehicles are more energy efficient than internal combustion engine vehicles. They convert a higher percentage of energy from electricity grid into usable power for driving, reducing energy use, etc. And the third one is the lower operating cost. क्या होता है. Lower operating cost है. Electric vehicles have lower operating cost compared to traditional gas powered vehicles. Electricity is generally cheaper than gas online. And electric vehicles require less ठीक है. बढ़िया. बढ़िया. अब देखो. ठीक है. Lower operating cost of electric vehicles are lower operating cost compared to traditional gas powered vehicles. Electricity is generally
cheaper than gasoline. Electricity is generally cheaper than gasoline, and electric vehicles require less maintenance due to less moving parts. Reduced noise pollution in electric vehicles. Yeah. Okay. So, uh, yeah. Reduced noise pollution. Electric vehicles are quieter than internal combustion engine, reducing noise pollution in urban areas and creating a quieter driving experience. Government incentives. Many government offer incentives and subsidies to encourage the adoption of electric vehicles such as tax credits, reduced registration fees, etc. Yeah. Government incentives. Many governments offer incentives and subsidies to encourage the population of electric vehicles such as tax credits. Regenerative braking. Electric vehicles other often have regenerative braking systems which recapture energy during braking and store it in the battery, further improving energy efficiency. Disadvantages of electric vehicles: limited driving range. Second, charging instruction. इसका है longer refueling time. तो फोर्थ वन इनिशियल कॉस्ट हाई होता है. चौथा पांचवा battery life and recycling. Battery life and recycling are ongoing concerns for always. ठीक है क्या battery life with recycling battery life and recycling are opening only are opening only ongoing on ठीक है बढ़िया. आप देखो देखो बढ़िया. तो देखो बैटरी लाइफ इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है. लिमिटेड ड्राइविंग रेंज. देखो वन ऑफ द प्राइमरी challenges with electric vehicles is their limited driving range compared to conventional vehicles. Although ranges are improving, some electric vehicles may still not be able to suitable for longer distances travel without frequent charging. Charging instructions. The availability of charging stations can be limited in some areas, making it difficult for
EV lovers charge. ठीक है. Initial cost क्या होगा? Electric vehicles generally have a higher cost compared to compared to ठीक है. Hybrid electric vehicle. क्या hybrid electric vehicle? Hybrid electric vehicle में क्या है? Liquid fuel engine, motor generator, battery, and then transmission. A hybrid vehicle is a type of automobile that combines two or more power sources to provide propulsion. ठीक है. A hybrid vehicle is a type of automobile that combines two or more sources to provide propulsion. A hybrid vehicle is a type of automobile that combines two or more power sources to provide propulsion. A hybrid is a type of automobile that combines two or more. The most common type of hybrid vehicle is the hybrid electric vehicle, which is typically combines an internal combustion engine and an electric motor. Types of hybrid vehicles: parallel hybrid electric vehicle, series hybrid electric vehicle, EV batteries. Okay, types of batteries: electric vehicle batteries are a critical. ठीक है. Electric vehicle batteries are a critical component of electric. ठीक है जी. बढ़िया.
ठीक है, टाइप्स ऑफ बैटरीज में लिथियम आयन बैटरीज होगी, सॉलिड स्टेट बैटरीज होगी। लिथियम आयन बैटरीज का लिथियम आयन बैटरीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप यूज इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिकॉज दीज आर हाई एनर्जी which they last for longer period of time. ठीक है, सॉलिड स्टेट बैटरीज क्या होती हैं? फॉर अ गुड चांस बैलेंस एंड सोसाइटी। ठीक है, सॉलिड स्टेट बैटरीज क्या? सॉलिड स्टेट बैटरीज तो solid state batteries are an emerging technology that aims to replace the liquid electrolyte in traditional lithium-ion batteries. Solid state batteries are an emerging technology that aims to replace the liquid electrolyte in traditional lithium-ion batteries with solid state electrolyte. Those batteries have the potential to offer high energy. ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। सो हो गए बैटरीज, हो गए बैटरीज क्या होती? इलेक्ट्रिक बैटरीज आर अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोवाइडिंग द एनर्जी स्टोरेज नीडेड टू पावर द इलेक्ट्रिक मोटर एंड propel the vehicle. इलेक्ट्रिक चार्जर क्या होता है? इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर Electric vehicle chargers are devices used to recharge the batteries of electric vehicles. Electric vehicle chargers are devices used to recharge the battery of electric vehicles. There are different types of EV chargers. ठीक है, चलो। तो लेवल फर्स्ट चार्जर होता है, लेवल 2 चार्जर होता है और डीसी फास्ट चार्जर होता है, टेस्ला सुपर चार्जर होता है। लेवल फर्स्ट चार्जर आर द मोस्ट बेसिक एंड यूजुअली कम विद इलेक्ट्रिक व्हीकल and purchased. They operate on a standard XB's volt household outlet. The charges are relatively slow, are suitable for overnight charging at home. And check for home purchase. ठीक है जी, बढ़िया। लेवल 1 चार्जर हो गया ना। These chargers are relatively slow and are suitable for overnight charging at home. Level 1 chargers typically provide a charging rate of about 3 to 5 miles of range per hour of charging.
ठीक है। लेवल 2 चार्जर क्या होगा? लेवल 2 चार्जर आर मोर पावरफुल देन लेवल 1 चार्जर्स आर रिक्वायर्ड टू 120 वोल्ट आउटलेट दे आर commonly installed at homes, workplaces, and public charging stations. And level 2 charges more fast charging rates. ठीक है, बढ़िया। लेवल 3 चार्जर क्या होता है कि ठीक है, बढ़िया। डीसी फास्ट, उसके बाद आता है डीसी फास्ट चार्जर, कब तक चार्ज करता है? तो 10 to level 2 charger provide fast charging rates typically around adding around 10 to 30 miles of range per hour of charging depending on the vehicle and charging मतलब 10 to 20 miles of range per hour of charging vehicle देता है। ठीक है। डीसी फास्ट चार्जर क्या होता है? डीसी फास्ट चार्जर also known as level 3 chargers are high powered chargers commonly found at public charging stations, rest areas and along highways. They provide rapid charging by delivering direct current power to the vehicle's battery. DC fast chargers can damage unlike vehicle. ठीक है। DC fast chargers also known as level chargers are high powered chargers commonly found at public charging stations, rest areas and along highways. They provide rapid charging by delivering direct current power to the vehicle's battery. DC fast chargers can recharge an EV to 80% capacity in around 30 minutes, making them ideal for long distance travel and quick top ups. ठीक है। They provide rapid charging by delivering the DC current to the vehicle's battery. DC chargers are ठीक है। टेस्ला सुपर चार्जर आर एक्सक्लूसिव फोर्थ होनी चाहिए। टेस्ला सुपर चार्जर आर एक्सक्लूसिव टू टेस्ला व्हीकल्स, टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. They are high-speed DC fast chargers designed specifically for Tesla cars. Superchargers can provide fast charging rates and are strategically placed along highways and popular travel routes to support long-distance travels for Tesla owners. ठीक है, बढ़िया। Okay, everyone. So we have just completed our today's target. I hope that you have also completed your target with me. Okay, so today was day and 101 and we have just successfully completed it. I hope that you have enjoyed it. So मिलते हैं कल 4:30 से 7:30 बजे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड मॉर्निंग, हैव अ वंडरफुल डे, बाय बाय।